Hi friends, my name is Amir Ali and I'm a corporate trainer. Friends, I'm gonna share today one of the most important things that I have learned recently, and that is what is basically self-esteem. Self-esteem है क्या? Self-image क्या चीज़ है? और self-esteem और self-image basically बनता कैसे है? This is a very important topic that everyone must understand this. Why? Because without self-esteem, you cannot achieve anything in your life. If you don't have self-esteem in your life, you will struggle a lot. So my friend, what is basically self-esteem? वो सेल्फ एस्टीम बनती कैसे है और इसको हम लोग कैसे प्रॉपरली आगे लेके चल सकते हैं? मैं इसमें एक बुक की हेल्प लूंगा जिसका नाम है द सिक्स पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। ये नेथन ब्रैंडन ने लिखी है और 1995 में थी। इज वन ऑफ द गुड बुक। लेस देन 400 पेजेस की बुक थी, बट इट गेव मी अनदर आइडिया कि सेल्फ एस्टीम को आप कैसे देख सकते हैं, आप सेल्फ एस्टीम को कैसे समझ सकते हैं, द वे यू कैन एलिवेट योर सेल्फ एस्टीम, द वे यू कैन प्रोपेगेट योर सेल्फ एस्टीम. This book has been divided into several topics. The first thing regarding is this, that you have to practice this. You have to practice your self-esteem. If you don't practice your self-esteem, you can never get your self-esteem. This is the main idea. Like anything, like any muscle, the self-esteem you can consider it as a muscle. जो आपका बॉडी का मसल होता है कैसे बनता है? You do it, you do it, you do it. Then वो आपका मसल जाके develop होता है. The same goes for basically self esteem. सिंपल एक मसल है. सबसे पहले इसमें जो पहला पिलर है, इसमें सिक्स पिलर्स हैं. इस तरह इस्लाम के पांच पिलर्स हैं, इसके छह पिलर्स कहा गया है. पहला है लिविंग कॉन्शियसली. लिविंग कॉन्शियसली. फ्रेंड्स, आप जो भी जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या आप वो अपने मुताबिक गुजार रहे हैं कि नहीं? क्या वो लाइफ आपके अकॉर्डिंगली है भी कि नहीं? क्या आप दूसरों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? अपार्ट फ्रॉम डिस्टर्बेंस whose roots are biological, I cannot think of a single psychological problem, from anxiety to depression to underachievement at school, at work, fear of intimacy, happiness or success, alcohol or drug abuse, spouse battering or child birth, codependency, and passive and chronic illness, suicide crimes. All of these judgments we pass in our life. None is as important as that one we pass to ourselves. कहने का मतलब क्या है? ये सारी बीमारियां, ये सारी चीजें, इनकी अपनी जगह है. ये बुरी हैं, ये सारी चीजें बुरी हैं. लेकिन इनमें सबसे बुरी चीज ये है जो हम अपने ऊपर जजमेंट देते हैं, जो हम अपने आप को बुरा करते हैं. फ्रेंड्स, जब अपने आप को बुरा करते हैं वो सबसे बड़ा जुर्म है मेरे नजदीक. हम अपने आप को छोटा करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और ये साइकिल बनता जाता है. ये साइकिल बनता जाता है, मूव होता है डाउनवर्ड स्पाइरल में, और डाउनवर्ड स्पाइरल में ये हमें तबाह करता है. तो फ्रेंड्स, सेल्फ एस्टीम इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिविंग कॉन्शियसली. कि पता है कि मैं जिंदगी गुजार रहा हूँ तो कैसे गुजार रहा हूँ. The definite work of self-esteem by the leading partner in the field, they say that you have to live self-consciously. But that does not take more courage than living unconsciously. This is a very strange thing. Living consciously or living unconsciously, this takes the same courage. It all depends on you, how you want to live your life. You want to live your life standing on the corner, or you want to go into the ground and face the audience. It's all on you, it's all on me. And it all goes in the practice. The six pillars: the practice of living consciously, the practice of self acceptance, the practice of self responsibility, the practice of self assertiveness, the practice of living purposefully, the practice of personal integrity. It all comes down to practice, practice, and practice. My friends, what determines the level of self esteem? It is what the individual do. What determines the level of self esteem is what the individual does. To find it humiliating, this is one of the most important things. I will repeat it. To find it humiliating to admit an error,
is certainly sign of a flawed self-esteem. क्या कहा मैंने? अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं और हमें अपनी गलती मानना एक बुरी चीज लगती है, इसका मतलब ये है हमारी सेल्फ एस्टीम फ्लॉड है। तो बीइंग ह्यूमन बीइंग हम लोग मिस्टेक्स करेंगे। दिस इज अ गिवन थिंग दैट वी विल मेक मिस्टेक। सो एक्सेप्ट द फैक्ट हम आदम की औलाद हैं और आदम ने गलतियां की थी तो हम गलतियां करेंगे। एक्सेप्ट द फैक्ट एंड मूव, क्योंकि अगर हम नहीं मानेंगे वी कैन नॉट। A practice implies a discipline of acting in a certain way over and over again. Because all these are practice. It is not action by fits and starts or even appropriate response to a crisis. Rather, it's a way of operating day by day in big issues and in small issues. A way of behaving that is always a way of being. So, in order to become have a great self-esteem, you need to develop this practice, my friends. If you don't develop this practice, you cannot live consciously. And secondly, accept yourself, accept your flaws, accept your responsibility. As a third principle states, accept your responsibility. हम मोस्टली जब भी कोई गलती होती है दूसरे पे डालने की कोशिश करते हैं कि मेरी गलती नहीं है उसकी गलती। फ्रेंड्स, दिस मीन्स आपकी सेल्फ स्टीम नहीं। एक्सेप्ट दैट कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। ये जो लकीरें हैं जिसको लोग कभी रिजिक की बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कोई बात करना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, जब खुदा ने आपको जिंदगी दे दी ना, तो मेरा मानना है हमारा हिसाब किताब अगर होगा तो मरने के बाद। So you have the choice. You have the choice to make decision. You have the choice to make your focus. And friends, wherever the focus goes, energy flows. And life is defined by the decisions you take. So what is your decision? I will say you, I will suggest you, decide to accept the responsibility. Decide to take the responsibility. And assert yourself. Assert yourself that you are something. You are living a life of consciousness. You have accepted yourself. You have accepted your responsibility. My friends, we cannot run from dark side, but we can also not run from bright side. Because anything that threatens us to make us stand out or stand alone, that calls for awakening the hero that lies within us. Everything that makes us to stand alone, it is a call कि आपके अंदर का जो हीरो है वो बाहर निकले। सो दैट कि आपका कॉन्शियस लेवल जो है ना बेहतर है। अगर हम ये नहीं करते तो हम अपने साथ क्राइम करते हैं। रिफ्यूजल टू अ गुड रिलेशनशिप, रिफ्यूजल टू एनीथिंग is refusal to yourself. The first step of healing and growth are awareness and acceptance. And then comes the self responsibility. The practice of self assertiveness is to live authentically, to speak and act again, to speak and act from my innermost conviction. फ्रेंड्स, जब आप अपने अंदर से बात करते हैं तो लोगों को आपकी बात सुनाई देती है, लोगों को आपकी बात समझ आती है। दिस इज सेल्फ असर्टिवनेस। फ्रेंड्स, your purpose has to be clear. Find your why. Find your why. As Simon says, आपका purpose क्या है? How do you want to live in your life? आपकी life कैसी होगी? To trust one's mind and to know that one is worthy of happiness is the essence of self-esteem, and that is a sense of purpose. Live purposefully. Now, what you must do, you must plan, you must discipline yourself, you must act on it. Because you cannot command himself, he has to obey. And many can command themselves, but much is lacking before they can obey themselves. My friends, इन 6 पिलर्स को फॉलो करो। 6 पिलर्स क्या है? लिविंग कॉन्शियसली, accepting yourself, self acceptance, self responsibility, self assertiveness, living purposefully,
and understanding what you must do. Disciplining yourself to do the same thing. Discipline is a thing that you have to do when you have to do. It's not that you do one time and you. If you don't understand this, watch my habit program. You can learn a lot from that. Your personal integrity matters a lot. Personal integrity is the last pillar. If you don't have integrity, you have nothing. So have personal integrity. Whatever you say, whatever you stand for, keep stand on that pillar. And have some pride. I don't think so that pride is a vice. It's a virtue that you have. Pride is something that you have done and you must take responsibility. अगर मैंने ये पेन बनाया है और ये पेन खूबसूरत बना है तो मुझे इसके लिए सॉरी नहीं होना चाहिए. I must be proud of that thing. If I am married, I must be proud of my wife. If I have a son or daughter, I must be proud of her. Then they are mine. My friends, अपने आप को फॉलो करें एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द लास्ट थिंग स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स मैटर 1% बेटर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग रोज अपने आप को 1% बेटर करते जाए और एक साल में आप 37% बेटर हो जाए यू कैन डू द मैथ जस्ट small improvement in yourself it can revolutionize your life and if you do it I will see you at the top see you in the next video bye.